पहले तो सर बधाई, congratulations for achieving the 1 lakh revenue landmark. Thank you very much. इस बार के नंबर्स को आप कैसे डिफाइन करेंगे सर? जिस तरह से हम हर क्वार्टर में आपकी अच्छा प्रदर्शन देख रहे हैं, इस बार पर्टिकुलरली जो आपने बीट की एस्टिमेट्स, उसका श्रेय किसको देंगे? देखिए, ये क्रेडिट इस चीजों की सबको जाती है, कोई इंडिविजुअल नहीं होता इसमें। और पूरे कंपनी में जो काम करते हैं वो प्लस डीलर्स प्लस वेंडर्स सबके मिलके काम करने के नतीजे जब निकलते हैं तब इस किस्म के नतीजे निकल पाते हैं। बट उसके लिए सब लोग काम भी जब करते हैं, अगर मार्केट कंडीशंस ठीक नहीं हो या गवर्नमेंट के एक्शन से कुछ और गड़बड़ी हो जाए तो अब किसी इत्तेफाक से गवर्नमेंट ने भी इन्फ्लेशन का, यूक्रेन का, ये ग्लोबल जो डिसरप्शंस हो रहे हैं सब जगह, government has actually done a very good job in keeping the economy pretty stable in this country. And ये जो कोविड ये वो किसी चीज से डिसरप्शन नहीं होने दिया. So I think that has also contributed to the performance of the company. At the same time, you have to remember performance is related to previous year's performance. Previous year's performance itself was not a outstanding performance by any chance because it was affected by these other factors of semiconductors and things like that. So it's a good performance. I don't think it's an outstanding performance. I don't think it's a performance which one can say we've done some extraordinary things, because in a growing market, normally a company should have a steady trajectory of growth in all areas. And it should be making record numbers almost every year. It's just unfortunate, last 4 years, things have gone up and down because of various factors. But usse pehle we had a fairly steady growth all these years. बिल्कुल सर. ऑल राइट, सो ये तो बात हुई आपकी अच्छे प्रदर्शन की, बट जो बड़ी बातें इस बार आई हैं हमारे सामने, स्पेशली द बिग अनाउंसमेंट ऑफ 1 मिलियन यूनिट्स कैपेसिटी एक्सपेंशन, सर क्या रैशनल है, इतनी जो आपकी ऑप्टिमिज्म है? हाँ, आई थिंक वो जो आप अब बात कर रही हैं वो असलियत जो इस वक्त डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और जिसकी वजह से फ्यूचर अच्छा लग रहा है, खास वजह उसकी ये है कि एक तो हम लोग की जो एक्सपोर्ट मार्केट है that is going up or will go up much faster than what anybody had predicted earlier. And इस वजह से भी है कि पहले हम पे गाड़ियां भी नहीं थी एक्सपोर्ट करने की, और एक्सपोर्ट्स के लिए हमारा नॉर्मल तरीका यही था कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन में से कुछ निकाल के गाड़ियां एक्सपोर्ट कर दीजिए. Now the volumes are becoming such and the demand is growing in such a manner that we can't do that. You have to have fairly dedicated production for export itself. And estimate here hai ki by the end of this decade, export should cross 750,000. Now that is a pretty large number, considering that few companies in India are even making 750,000 cars in a year. So if by exporting of that number, then if you export that number, you need capacity. हमने जो projections किए और estimate किया आगे की demand का, उसके हिसाब से ये लगा कि अगर हम खरखौदा का पूरा utilization कर लें land का और 1 million units का वहाँ production करने लगे, even then we will not have the surplus capacity for exports. So excess capacity was required for that purpose. Now this is assuming that domestic market will continue to grow steadily at around 6-7% a year. Not high, because I don't think the Indian car market is going to go into double digits the way things are. We'll maybe grow at around 6-7% a year. Along with which this export growth will now from 200, well, this year we were 260,000, will go up to 750,000. That's a big increase. That's big, बिल्कुल. So that's why we need more capacity. Okay, so clearly export की demand और यहाँ पर opportunity देखते हुए आपने इतना बड़ा expansion plan outline किया है. तो मैं ये जानना चाहूँगी sir, the capex that you are
then lining up ये capacity setup करने के लिए. I know, of course, you have excess and a lot of cash which will be utilized, but एक sense दीजिए sir, annually कितना investments हम देखेंगे आते हुए. और मैं electric vehicle पर बाद में आऊंगी sir. पहले मैं आपकी capacity expansion को लेकर with all that you are factoring in, कितनी हो जाएगी over a period of time that you are talking about? See, exact time तो predict करना मुश्किल है. But when we complete Kharkhoda, 1 million, and when we complete this new site of 1 million, then the total capacity of Maruti will be, we have 1.3 just now in Gurgaon plus Manesar. 1.3 plus 2 will become 3.3. Plus little bit we are adding at Manesar, make it 100,000, 3.4. Suzuki की capacity 8 लाख की अलग है. So that will make it 4.2. Something Right. from Toyota is giving us about 100,000, 150,000. Correct. So 4.3, 4.4 की capacity हो सकती है total. Okay. और सर कितना capex इस पूरे expansion में? अभी again that गुड़गांव खरखोड़ा का भी 1 लाख, sorry 10 लाख का estimate कोई approved हुआ नहीं है अभी तक. जी. But judging from the expenditures which were incurred in Suzuki in Gujarat, एक very broad अंदाजा ये है कि 1 million units का खर्चा शायद 24-25 हजार करोड़ के आसपास आ जाएगा. Fair enough. तो ये तो it's a very rough, it's not. Yeah, sure. Ballpark. Fair enough. Ballpark. तो ये तो बहुत strong expansion, जिसमें आपने एक बड़ा projection रखा है, जिस तरह से outlook दिख रहा है, promising of the market. अब electric vehicles roadmap सर समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप market leader हैं in the car industry in India with a solid market share. लेकिन EV में अभी आपकी presence relative to some other players कम है, and that you are doing a catching up game. तो मैं ये जानना चाहूंगी SUVs और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यहाँ पर आप क्या फोकस है, कितनी नई EVs, since you have taken more time, तो क्या हम आपसे एक्सपेक्ट करेंगे बैक टू बैक एक स्लू ऑफ EV की लॉन्च आते हुए नजर आएगी आपके एंड से? Are you now convinced that the market is ready for electric vehicles? See, the first EV will come in FY25, 24-25. And we have at the moment 6 models of EVs lined up by the end of the decade. So we will have a fair amount of options available for customers to choose from. But as I have always said, we are not relying on EVs 100%. We also want to keep our options open for other technologies. So because this is India, you have to have more options always. Ji, boliye sir. So other options like CNG, ethanol, hybrids, possibly CBG, if CBG can be developed in India. So these are all options which we would like to keep with us. Okay. But so what is certain is we want to be very much ahead of others in trying to achieve carbon neutrality. We will ultimately goal the carbon neutrality का है ना, not बिल्कुल सर. तो वहां पर भी आप लीड करने की बात करें. लेकिन सर मैं एक सवाल इसलिए पूछूंगी आपसे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ऑलरेडी मार्केट में सब 10 lakh, which is the real price that your company looks at always. और आपने हमेशा कहा है कि एक्सपेंसिव ईवी लाके कुछ फायदा नहीं है अगर आप उसको अफोर्डेबल नहीं बना सकते, ज्यादातर लोग उसको नहीं कर सकते. तो क्योंकि अभी गाड़ियां आ रही हैं तो कंपटीशन सर क्लियरली यहाँ बढ़ेगा. मैं उस पॉइंट से आपसे समझना चाह रही हूँ आपकी ईवीज किस रेंज में और किस टाइप की होंगी? आर वी टॉकिंग ऑफ SUVs largely in EV space? अभी तो SUVs will be predominant, but we will get to other types of vehicles also. It all depends on the market, Swati. I mean, it depends how the customers are looking and how they will react to vehicles with other fuels and electric vehicles. We have to see.
See, we want to keep ourselves flexible and adjust to what the customer wants. ओके, ऑल राइट सर, बहुत बहुत धन्यवाद Thank you. हमें इंटरव्यू देने के लिए और बताने के लिए आगे मारुति के क्या प्लान्स हैं। धन्यवाद, थैंक यू एंड ऑल द Thank बेस्ट। you.